चलो आगे सब। कौन सा टॉपिक चल रहा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कुछ बातें हमने एसिड के बारे में की थी, कुछ बातें हमने बेस के बारे में की थी और कुछ बातें सॉल्ट के बारे में भी हमने कर लिया है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे। अभी एसिड, व्हाट अबाउट, पहले डिस्कस करेंगे कि एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा है। Acid, the word acid is derived from the Latin word acidus. The meaning of acidus is sour taste. So all acid have one common property and they are sour in taste. So acid are classified into organic acid and minerals acid. The acid which derived from naturally, that is from plants and animals, is called as organic acid. And the acid which derived from inorganic substances, that is called as a minerals acid. Organic acid like citric acid found in lemon and oranges, then oxalic acid rich in tomatoes, malic acid found in tomatoes, tartaric acid found in ripe mango and grapes, ascorbic acid found in amla. Yes, Prashant, good. Acetic acid found in vinegar, then formic acid found in ant sting. All these are acid, and all these acid are naturally occurring acid. That is why called as organic acid. Organic acid is also called as carbon compound acid because in all these acid containing carbon atom. Inorganic acid, that is minerals acid derived from inorganic substances. One more. For example, H2SO4. H2SO4 is nothing but sulfuric acid. HNO3 is called as a nitric acid. HCl, hydrochloric acid. H3PO4, phosphoric acid. All these acids are called as a minerals acid, and these acids are used in laboratory reagent. H2SO4 is called as a king of chemicals. H2SO4 is called as a king of chemicals. Like organic acid are weak acid, similar way minerals acid, that is a strong, corrosive. Next classification of acid is concentrated acid and dilute acid. The acid which contain more amount of acid and lesser amount of water is called as a concentrated acid, and contain more amount of water and less amount of acid, that is called as a dilute acid. The subscript, that is a subscription is used, concentrated, dilute. One more classification are there, that is a strong acid and weak acid. Those acid which dissociate 100%, which dissociate completely and gives a more number of H plus ions, that is called as a strong acid. And those acid which dissociate partially and gives a less number of H plus ions, that is called as a weak acid. So these are the classification of acid. Which classification? What classification of acid? That is a strong, weak, concentrated, dilute, and one more is organic and minerals acid. How acid is prepared? Acid is prepared from non-metallic oxide. When non-metal reacts with oxygen to form a non-metallic oxide, like carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, and this non-metallic oxide, when dissolved in water, it gives acid. The nature of non-metallic oxide is acidic in nature. Different methods are there. For example, CaCO3 and dissociation gives CaO and CO2. From CO2 we can prepare acid. So these different methods from which acid can be prepared. Next is base. What is a base? Base are metal oxide or metallic hydroxide. Bases are metal oxide or metallic hydroxide. When metallic hydroxide dissolve in water, it gives base. For example, sodium, magnesium, calcium, any metal when reacts with oxygen to form corresponding metallic oxide, and this metallic oxide when dissolved in water
it gives base. For example, sodium. Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide, and the sodium oxide reacts with water, it gives sodium hydroxide. If bases dissolve in water to form alkalis, but all bases does not dissolve in water, means all alkalis are bases. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Okay, that is an important statement out there. Ki all bases, all alkalis are bases, because all bases are not soluble in water. So all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. So what is the example of, what are the example of bases? For example, NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide. Sodium hydroxide and potassium hydroxide found in soap. Ammonium hydroxide found in window cleaner solution. MgOH by 2, magnesium hydroxide. Yes, magnesium hydroxide found in a milk of magnesia. So these are the uses of, and these are the bases that are found in different substances. One more important thing is there, ki acidity, basicity. Number of coffee is acidic. Okay, coffee acidic. कैफीन प्रेजेंट होता है उसमें, कॉफी में कैफीन प्रेजेंट होता है. एसिडिटी, बेसिसिटी, number of hydrogen replaceable hydrogen atom, listen, number of replaceable hydrogen atom present in a molecule of acid is called as the basicity of that acid. For example, HCl. In HCl, only one hydrogen is there. That's why basicity of acid is 1. H2SO4. In H2SO4, 2 hydrogen atoms are there. Therefore, the basicity of acid is 2 for H2SO4. Like H3PO4. In H3PO4, basicity of acid is 3. Or for base, acidity is determined. Acidity of base. What is meant by acidity of base? Number of OH minus ions. How many OH minus ions are present in a given base, that is called as the acidity of base. For example, NaOH. In NaOH, number of OH group is 1. So therefore, acidity of base of NaOH is 1. MgOH by 2. In MgOH by 2, OH minus ion molecule is 2. Therefore, acidity is 2. AlOH by 3. OH is 3. Therefore, acidity is 3. So that is acidity and basicity. After that, last time we discussed about salt. What is one salt? When acid reacts with base to form salt and water. Turmeric is acid or base? Turmeric is an indicator. That is almost neutral indicator है. वो acid और base में उसको हम नहीं कर सकते. Indicator, Anushka. Then base. When acid reacts with base to form salt and water. This reaction is called as a neutralization reaction. So salt, different types of salt are present. Salt of strong acid and strong base. Salt of strong acid and strong base. They are neutral in nature. Salt of strong acid and weak base. Salt of weak acid and strong base. And salt of weak acid and weak base. So these are the types of salt. Different salt are discussed in last chapter, that is NaCl, sodium chloride. How sodium chloride is prepared. What are the chemical properties of sodium chloride in discussing last chapter. Then sodium carbonate, sodium bicarbonate, these are also salt. And these salt are derived from acid and base. And there is a different types of acid and different types of base are used. So write down which salt, what are the uses of salt, and salt, how salt is prepared. Write down first column, common name of salt, common name. Next is chemical name. Third is chemical formula.
third is chemical formula, and fourth is uses. ऑलरेडी यूजेस हमने लिख चुके हैं, ऑलरेडी यूजेस तो हमने लिखे हैं, तो यूजेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सबके यूजेस लिख के दिए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो बता दो, मैं फिर से लिख के दूंगी। पहला है कॉमन नेम, वॉशिंग सोडा। फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। भूल गए इतने जल्दी? किसी को नहीं पता केमिकल नेम? गुड अनुष्का, अनुष्का वेरी गुड। अरे केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लिख के दिया था लास्ट टाइम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, क्या फॉर्मूला था इसका? Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट्स मींस वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? 10। यस, गुड अमित। सेकेंड इज बेकिंग सोडा। हमने सेकेंड किसके बारे में पढ़ा था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, sodium hydrogen carbonate. Yes, formula is NaHCO3. यूजेस सबको लिख के दिए मैंने, NaHCO3. Then next is bleaching powder. Next is bleaching powder. Formula of bleaching powder is, chemical name calcium oxychloride. Chemical name is calcium oxychloride. Yes, formula is CaOCl2. bleaching powder. Uses of bleaching powder: use as oxidizing agent, disinfecting water, manufacture of chloroform, etc., etc. Then one more is plaster of Paris. One more is plaster of Paris, POP. Write down formula, chemical name calcium sulfate, calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate. What is the formula of calcium sulfate? CaSO4 half H2O. CaH2O half H2O. श्रेया, CaSO4 H2O नहीं होता, half H2O. half H2O. नेक्स्ट हो गया, यहां तक क्लियर है? डन, गुड। स्टैंड ऑफ फास्ट फास्ट, ये तो हमने लास्ट टाइम ही किया था। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब पढ़ के आए हो ना? थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो मैंने दे ही दी, अभी इतना रिवाइज कर लिया हमने 20 मिनट तक, तो आइडिया आ चुकी होगी। गुड, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट।
Write down question number 1. एक मिनट, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ना शायद. राइट डाउन. यू आर गिवन, मैं बता रही हूँ, मैं डिटेक्ट कर रही हूँ, आप लिखो. अच्छा आप लिखो, मैं डिटेक्ट कर रही हूँ. ओके, डिटेक्ट लिखो. यू आर गिवन 3 test tube. You are given 3 test tube. The 3 test tube contain distilled water. The 3 test tube contain distilled water, acidic solution, and the basic solution, respectively. There is only red litmus paper available. There is only red litmus paper available in order to identify what is there in each test tube. What is there in each test tube? How will you find out what is in each of the test tube? What is in each of the test tube? कर सकते हो ना. 3 टेस्ट ट्यूब दिया है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. अगर आपके पास एक ही लिटमस पेपर है, कौन सा है? रेड लिटमस पेपर. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई बता सकता है? सिंपल है. चलो राइट डाउन आंसर. गुड हर्षदा. हाँ, डिपिंग इट, मुझे पता है. डिप तो करना ही पड़ेगा ना उसमें क्या ये आंसर है क्या? डिपिंग इट. राइट डाउन आंसर. राइट डाउन. यार सही में मस्त आंसर था, डिपिंग इट. मतलब वही, हाथी अगर कुएं में गिर गया तो हाथी निकलेगा कैसे? तो गीला होके वाला बात है ना. गुड हर्षदा, वेरी गुड. चलो शॉर्टकट में आंसर दे दिए. राइट डाउन लॉन्ग आंसर, मतलब लिखो अभी. राइट डाउन आंसर प्रॉपर वे. ओके, क्योंकि बोर्ड से भाई आपका, तो ये राइट डाउन. वी कैन आइडेंटिफाई. राइट डाउन आंसर. मुझे भी लिखना है, ये लिखना पड़ेगा आंसर कि सिर्फ डिक्टेशन करो? हाँ, डिक्टेशन से हो जाएगा ना. ओके, राइट डाउन आंसर. ओके. रेड चेंज टू ब्लू, देन बेसिक सॉल्यूशन. यस, सिंपल है ना. अगर रेड टू ब्लू जा रहा है तो बेसिक. रेड टू रेड ही अगर रहेगा तो एसिडिक. अगर नो कलर चेंज, न्यूट्रल. राइट डाउन प्रॉपर आंसर. वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट. We can identify. Write down. We can identify
the content in each of the test tube, in each of the test tube using red litmus paper, using red litmus paper. This can be done by noticing, this can be done by noticing the color change of the red litmus paper, color change of the red litmus paper. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. इसमें the solution which turn red litmus to blue, ये तो सिंपल पता है ना सबको. The solution which turns red litmus to blue contains a basic solution. The solution which turns red litmus to blue contains basic solution. Then divide, next point. Divide the formed blue litmus paper. Divide the formed blue litmus paper. Divide the formed blue litmus paper into two parts. Next point. Third, na? Next point. The solution from the test tube. The solution from the test tube which turns blue litmus paper to red, will be the acidic solution. Next point. Solution of the test tube which do not change either red or blue litmus paper contain water. सही बात है ना, मस्त एक्सपेरिमेंट था ये. रेड और ब्लू लिटमस पेपर कंटेन वाटर. सही है ना. अगर आपको एक ही लिटमस पेपर दिया है तो पहले क्या करोगे आप, अगर बेस में डाल दो तो ब्लू हो जाएगा. ब्लू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो. फोर्थ पॉइंट रिपीट करना है. ओके हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या था? सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब which do not change either red or blue litmus paper contain water. क्लियर हुआ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आप करते जाओ. नंबर सेकेंड आप ट्राई करोगे. राइट डाउन. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character?
character in aqueous solution, while solution of compound, like alcohol and glucose do not show acidic character. चलो आंसर लिखते जाओ. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Fourth, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Number 5. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? Six, name the substance which on treatment with chlorine in bleaching powder. चलो पहले आप आंसर लिखोगे, उसके बाद हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे. ओके, चलो थोड़ा फास्ट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है और हमारे पास. Why do HCl, HNO3, etc. shows acidic character in aqueous solution, while solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character?
Yes. Yes. चलो फर्स्ट आंसर लिखा किसी ने? क्या क्वेश्चन है? Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character and glucose and alcohol does not? Release of H plus ions in water will make a compound acidic or non-acidic. According to the different theory, when compound reacts with water, it gives H plus ions. So HCl, HNO3, when dissolved in water, it gives H plus ions, means acidic in nature. Because acid are the substance which upon dissociating with water result in the production of hydrogen ion, means H plus ions. Yes, very good. But other hand, alcohol and glucose, if they dissociate in the aqueous solution, which result in the production of hydrogen gas, not production of H plus ion concentration. यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज H प्लस आयंस नहीं देते हैं, इसलिए वो एसिडिक नहीं होंगे. ठीक है, चलो लिख लिया सबने, फर्स्ट का आंसर हो गया सबका. सेकेंड, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Conductance of electricity means conductors, when conductance of electricity, there is a charge particles. Very good, सबका सही है. तो charge particles are responsible for the conductance of electricity. For conductance of electricity, charge particles are responsible. So this charge particle called as ions. Charge particle positive होगा या negative होगा. So when acid dissolved in water, it dissociated into its ion, and because of these ions, acid conduct electricity. Acid conduct electricity. Good, Anushri. Next, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? अभी dry HCl does not give out hydrogen ion. Yes, dry HCl does not produce H plus ions. Therefore, HCl does not show any acidic behavior, and the color of the litmus paper remain the same on reacting with HCl gas. Okay, clear हुआ? H plus color कब show करेगा? जब H plus show होगे. Dry HCl it does not give any color. Sorry, any H plus ions. Then, what effect does the concentration of H plus ions have the nature of the solution? Fifth question. Good, very good. Hydrogen ion concentration decide the nature of solution. Hydrogen ion concentration decide the nature of the solution. If hydrogen ion concentration increases, the solution turns acidic, and similarly, if hydrogen ion concentration decreases, the solution is turned to basic. H plus ions बढ़ेगा, acidity बढ़ेगी, मतलब acidic nature बढ़ेगा. H plus ion decrease होगा, तो basic nature बढ़ेगा. Next, name the substance which on treatment with chlorine is bleaching powder. Good, Anushri. Anushka. Good. Good, Anushri. Lime water या calcium hydroxide. Lime water or calcium hydroxide. Very good. चलो, क्लियर हुआ यहां तक? रब कर दो. डन. यस आर्यन, तुम्हारा भी सही है, लेकिन इतने सारे नाम जा रहे जल्दी जल्दी में, तो इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ. ठीक है आर्यन, आपका भी सही है, इतना थोड़ी है. डन. चलो, नंबर 6 हो गया. नंबर 7 डालो जल्दी से.
Number 7. A solution turns red litmus blue its pH is likely to be option A 1, option B 4, 5 and 10. Eight, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. 9. Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? A, antibiotic. Option B, analgesic. Option C, antacid. And D option, antiseptic. Ten. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Good. तृप्ति सही है. चलो स्टार्ट करें. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be 1, 4, 5 या 10. गुड. चलो फटाफट आंसर दे दो सब लोगों ने. वेरी गुड. सबको पता है. pH scale. pH is equal to minus log to the base 10 H plus ion concentration. POH minus log to the base 10 OH minus ion concentration. pH plus POH is equal to 14. If pH is 1 to 7, that is acidic. 7 to 14 basic, and 7 is neutral. So red litmus to blue. In which solution red litmus paper turns to blue? That is a basic solution.
127 acidic, तो 1 4 5 acidic है, but 7 10 that is a basic. That is a basic. Then next, write an equation to show reaction between plaster of Paris and water, POP and water. It gives CaSO4 dot half H2O plus water. It gives CaSO4 plus 2 H2O, that is cement. CaSO4 dot 2 H2O. Clear? Formula of plaster of Paris is CaSO4 dot half H2O. Reacts with water, it gives CaSO4 plus dot 2 H2O, dot 2 H2O. Next, which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? Good, very good. सबको पता है, इनो है, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एंटासिड. एंटासिड एक एंटी हिस्टामाइन भी होता है, लेकिन वो अलग है, एंटासिड. नेक्स्ट, व्हाई डज distilled water not conduct electricity whereas rain water does? ज्यादा जल्दी में नहीं हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? अगर किसी को लग रहा है कि मैम ज्यादा फास्ट जा रही है तो प्लीज बता देना. गुड हर्षदा. Distilled water does not contain any ions, whereas rainwater has a lot of or more compound. Rain water dissolve and rain acidic nature होता है यहाँ पे and form a carbonic acid. But यहाँ पे जो distilled water है उसमें कोई भी ions present नहीं होते हैं, कोई भी ions present नहीं रहेंगे. Okay, that's why. चलो आगे बढ़ते, फिर रफ कर दूं, सबने लिख लिया है? डन. ओके, कितने क्वेश्चन हुए? 10 क्वेश्चन. नंबर 11. अखिलेश, लास्ट आंसर क्या था कि distilled water does not contain any ionic compound. Distilled water does not contain 9 o'clock. Shubham, distilled water does not contain any ionic compound, whereas rainwater contain ionic compound. That's why. Okay. Number 11. Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? In the absence of water. Answer is same as previous one. Then 12. Next is 12. 5 solution. 5 solution. A, B, C, D, and E. When tested with universal indicator, that is indicator,
universal indicator show pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is A, neutral, B, strongly alkaline, C, strongly acidic, D, weakly acidic, weakly alkaline, alkaline. 13. Fresh milk has a pH of 6. कितना होता है fresh milk का pH? 6. How do you think the pH will change? pH will change as it turns into curd. Explain your answer. बस हो गए आर्यन, थक गए इतनी जल्दी? और तो बहुत क्वेश्चन है, करते ही जाएंगे खत्म नहीं होने वाले एसिड बेस के ऊपर। देखो आर्यन को पूछा तो आर्यन ने तो नो कहा, लेकिन कल्पिश ने बोला हाँ मैं थक गया अभी। कितने क्वेश्चन किए? 13 चल रहा है, एटलीस्ट 15 तो होनी चाहिए, और 2 दे दूंगी बस। इसके बाद एक अच्छा वाला क्वेश्चन दूंगी, वो कर लेना, उसके बाद हो गया। चलो इसको सॉल्व करें। Why do acid not show acid behavior in the absence of water? The acidic, yes, very good, Trupti. The acidic behavior from acid is because of the presence of hydrogen ion. When acid dissolves in water, it gives H plus ion. That is the test for conformation of acid. So hydrogen ion can only be produced in the presence of water, and therefore water is definitely needed if acid are to show their acidic behavior. Next, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator show pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? Obvious है, neutral तो समझ में आ गया। Neutral 1 to 7 acidic, 7 to 14 basic and 7 is neutral. तो neutral होगा 7. Yes. Strongly alkaline, कितना होगा strongly alkaline? Good. From 7 to 14 जा रहे तो बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है, तो strongly alkaline 11. Good. Strongly alkaline 11. Strongly acidic, good, very good. Strongly acidic, that is 1 to 7.
तो 1 to 7 जाएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, तो 1 इज स्ट्रांगली एसिडिक, 1 इज स्ट्रांगली एसिडिक. देन वीकली एसिडिक 4, very good. Weakly acidic 4, 4, 5, 6 weakly acidic. And weakly alkaline, good, एक ही तो बचा अभी. Weakly alkaline 9, weakly alkaline 9. Then next 13, fresh milk has a pH of 6. Good, Komal. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Because fresh milk is turned to curd due to production of lactic acid. And lactic acid reduce the pH of milk. Lactic acid reduce due to formation of lactic acid. And lactic acid reduce the pH of the milk. चलो next लिखो, number 14. एक लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 14. राइट डाउन. अ मिल्कमैन, दूध वाला, ठीक है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, आपको पता है ये, एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा. अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. To fresh milk. A लिखो उसमें, राइट डाउन A, नीचे लिखो. Why does he shift? Why does he shift the pH of the fresh milk? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्वेश्चन समझ में आया? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? उसमें B लिखो, क्वेश्चन B लिखो. Why does this milk take a long time to set as curd? To set as curd. To set as curd. क्या रीजन हो गए? क्वेश्चन क्या था? A milkman adds a very small amount of baking soda. किसी को पता है कि मिल्क में बेकिंग सोडा भी डाला जाता है? आपके घर में जो भी दूध आता है उसमें बेकिंग सोडा होता है. पहला क्वेश्चन था, why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? अच्छा, आपको नहीं पता था आर्यन? बेकिंग सोडा भी डाला जाता है. अभी सब दूध में नहीं होता है, कोई कोई डालता है. पहला को आंसर है. He shifted the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to production of lactic acid. दूध जल्दी खराब ना हो, इसीलिए वो किसमें यहाँ पे प्रिवेंट करना चाहता है फ्रॉम गेटिंग sour ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. क्योंकि अगर प्रोडक्शन हुआ लैक्टिक एसिड का तो दूध खराब हो जाएगा. यस, टू प्रिवेंट टू बिकम sour. गुड. बी, this milk take a long time to set into curd because the lactic acid produced here first neutralize the pH and then pH is reduced to turn milk to curd. Yes, क्लियर हुआ है? पहले क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा ना. पहले pH क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा. आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन pH is reduced to turn milk to curd. ये रीजन होता है, इसीलिए वो क्या डालता है? मिल्कमैन क्या डालेगा? सोडियम बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा नहीं डालता है, नहीं तो बोलोगे वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा नहीं. कौन सा सोडा डाल रहा है वो? बेकिंग सोडा. फॉर्मूला NaHCO3.
Formula of baking soda is NaHCO3. Yes. And sodium washing soda Na2CO3. Na2CO3. क्लियर हुआ है एसिड बेस? किसी को कुछ भी डाउट है एसिड बेस में? दोनों होता है, स्लेक लाइम और लाइम वाटर दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कोई डाउट नहीं है, पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है क्योंकि हमारा एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप पे मुझे सेंड कर सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे ग्रुप पे भेज दो, तो वहां पे भी मैं आंसर दे दूंगी। यस यस, अटेंडेंस दे दो। यस, आर्यन को घर अभी अभी लीव करने की बड़ी है, दे दो अटेंडेंस दे दो और आप निकल सकते हो। चलो बाय। नहीं आ रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग को अटेंडेंस देने के लिए कहा तो बहुत ज्यादा फास्ट करते हो एकदम से। दे दो भाई, दे दो। चलो, जिन्होंने अटेंडेंस दी है वो जा सकते हैं। चलो बाय बाय। यस यस, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, मैं आपको सेंड करती हूँ। मेरे पास और क्वेश्चन है, मैं आपको ग्रुप पे सेंड करती हूँ आज। ओके, तो आप सॉल्व कर लेना पूरे क्वेश्चन। बाय। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है कि ये क्लास में हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप सॉल्व कर लो आराम से। चलो बाय, अटेंडेंस देते जाओ। ये तो कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आर्यन, कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप एसिड बेस डाल दो 10 स्टैंडर्ड, तो आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी। ओके सबकी अटेंडेंस हो गई है? ओके, आर्यन, अखिलेश, अक्षदा, अनुश्री, डन। कोई बचा नहीं ना? चलो ठीक है, फिर मैं लीव कर रही हूँ। बाय।